कुमार गुप्ता, सहायक प्रबंधक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एचपीसीएल की तरफ से यहाँ हमारे बीच सभी अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इस ड्रिल को पूरा हम देखेंगे। जितने मेरे इंडस्ट्री के मेंबर्स आए हैं, कैटेगरी से आए हैं, मंडल से आए हैं और कहाँ से है, कोई और इंडस्ट्री से, मेरे एचपीसीएल के अलग म्यूचुअल एड मेंबर्स आए हैं। तो मैं सभी अपने सहपाठियों से और म्यूचुअल एड मेंबर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस ड्रिल के मिनट्स आप लोग ऑब्जर्व करें और जब ड्रिल खत्म हो जाएगी तो हर ड्रिल में इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है। तो हम ड्रिल के बाद आप सभी से चर्चा करेंगे कि आप लोगों के हिसाब से कहाँ कुछ गलतियाँ हुई हैं और कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू जितने त्याच्यामुळे पण कंट्रोल रूमला अलार्म येतो। तुम्ही आता पाहू शकता की नियंत्रण कक्षाने लाईन वॉकरला सांगितले आहे की 116.6 ला जाऊन पहा की तिथे पीड्स मध्ये पण अलार्म आलेला आहे आणि एलडीएस मध्ये पण अलार्म आले। तुम्ही गोले जी, अच्छा सॉइल गीला है और पेट्रोल का भी स्मेल आ रहा है आपको, तो आप तुरंत सिक्योरिटी सुपरवाइजर को कॉल करके बता दीजिए, वो उनको भी साइट में आने के लिए बोलिए और एक बार चेक करके मेरे को रिपोर्ट कर दीजिए। त्यांच्यामधील ताळमेळ, कोऑर्डिनेशन आणि क्विक रिस्पॉन्स म्हणजे किती जलद तुम्ही रिस्पॉन्स देऊ शकता त्याच्यावर असते। तुम्ही पाहू शकता की आताच सिक्युरिटी सुपरवायझर महाजन घटनास्थळी पोहोचलेले आहेत। अतिशय वेगाने हे काम होतं की तुम्ही जेवढ्या लवकर प्रयत्न कराल तेवढ्या लवकर हे आपत्कालीन परिस्थिती हाताळली जाऊ शकते। तुम्ही पाहू शकता महाजन पण घटनास्थळाची पाहणी करत आहेत। त्यांनी चेक केलेलं आहे की माती ओलसर आहे का, वास घेतलेला आहे, ते जोरात पळत आहेत। याचा अर्थ की तिथे 100% काहीतरी झालेलं आहे त्याचा। तो तुरंत आप आरओई ऑफिसर को इन्फॉर्म कीजिए और मैं भी उनको और साइड इंस्पेक्टर कंट्रोल रूम को बताता हूँ। ठीक है, आई एम रशिंग टू द साइट। तुम्ही पाहू शकता की नियंत्रण कक्ष किती वेगाने सर्वांबरोबर संपर्क करत आहेत, हे खूप महत्त्वाचं असतं। तुम्ही पाहू शकता की आरओई ऑफिसर यांच्याबरोबर कंट्रोल रूम यहाँ 116.5 पर प्रोडक्ट लीक हुआ है। मैं पाइप में लोकेशन पे हूँ, आप लोकेशन इंचार्ज को इन्फॉर्म करें, इमरजेंसी डिक्लेयर करें। तुम्ही इंसिडेंट कंट्रोलर अतिशय वेगाने साइटवर रिपोर्ट केलेला आहे। तुम्ही पाहू शकता त्यांनी पण घटनास्थळाची पाहणी केलेली आहे। घटनास्थळी त्यांना पण लिकेजची शक्यता जाणवत आहे। कंट्रोल रूम कम ऑन लाइन। यस सर। Control room, there is a leakage here at 116.6. Please stop the pipeline, take a shutdown, and also inform Trombay. यस सर, यस सर। Also inform the fire and safety and the maintenance team to rush to the site. यस सर। कम्युनिकेशन होत आहे, कम्युनिकेशन होत आहे। तुम्ही पाहू शकता की कार कंटिन्युअसली लाल झेंडा एरियामध्ये कोणीही एंटर होऊ नका। इकडे तुम्ही पाहू शकता या साईडून तुम्ही बघा फायर टीमचे मेंबर साईटवर पोहोचलेले आहेत। अतिशय वेगाने फायर टीमचे मेंबर एसआयसी सर, फायर टीम एसआयसी सर बमोल नाही आहे। फायर टीमचे मेंबर त्यांचे उपकरण घेऊन सज्ज होत आहेत। इथे पाण्याचा टँकर पण बोलवलेला आहे की समजा जर फायर हो गया है, जमीन पे गिर गया है, बेहोश हो गया है, उसको प्लीज रेस्क्यू कीजिए, एम्बुलेंस की तरफ ले जाइए। कंट्रोल रूम प्लीज डिप्रेशराइज द लाइन। सर ट्रॉम्बे से बात कर रहा हूँ, अभी डिप्रेशराइज करने के लिए रेडी है। काफी लीकेज हो रहा है तेजी से यहाँ पे, ट्रॉम्बे इन्फॉर्म कीजिए, लोनी साइड भी बोलिए। त्यांची पोझिशन घेऊन आहेत की आणखी काही आपत्कालीन परिस्थिती ओढवली तर ते या गोष्टी हाताळण्यासाठी ते सज्ज आहेत। तुम्ही पाहू शकता एनडीआरएफ, तुम्ही पाहू शकता की कोणीतरी अज्ञात व्यक्ती साईडने व्हिडिओ आग विझवण्याचा प्रयत्न आग विझवण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे। आग विझवण्याचा आटोकाट प्रयत्न फायर टीम करत आहे। तुम्ही इथे पाहू शकता गार्ड कंटिन्युअसली लाल झेंडा दाखवून सांगत आहे की इकडे मेंटेनन्स टीमच्या कामावर काही परिणाम होऊ नये याच्यासाठी हे 180 डिग्री नोझल यूज करून तुम्ही पाहू शकता डीसीपीनं आग विझलेली नाही, फायर टीमनं फोम टेंडर यूज केलेला आहे जेणेकरून ही आग आटोक्यात येण्यासाठी वाऱ्याची दिशा बघून त्यांनी
बॉम्ब टेंडर वापरलेला आहे, आग विझवण्याचं काम चालू आहे. तुम्ही इथे पाहू शकता अतिशय वेगाने सर्व गोष्टी घडत आहेत. अतिशय थरारक गोष्टी इथे तुम्ही पाहू शकता, अनुभवू शकता. इथे तुम्ही बघू शकता. तुम्ही बघा इथे गार्ड कंटिन्युअसली सर्वांना सांगत आहेत की लाल झेंडा दाखवत आहेत, इथे कोणी एंटर होऊ नका. फायर टीमनं अतिशय पराकोटीचा प्रयत्न करून आग विझवायचा प्रयत्न केलेला आहे. तुम्ही बघू शकता इथे फायर टीम त्यांचे अतिशय प्रयत्न करून आग विझवायचा प्रयत्न करत आहे. पाहू शकता एनडीआरएफचे जवान पण इथं मदत. जितना भी प्रोडक्ट था पूरा ईआरवी से निकाल दिया सर. हाँ ERV से निकाल दिया, तो आप अपना रेगुलर मेंटेनेंस चालू कीजिए. तुम्ही पाहू शकता अतिशय वेगाने सर्व काम चाललेलं असतं. ही ड्रिल ही अशी घटना. कंट्रोल रूम कमल नाईक, ऑनलाइन सर. please ask Bombay and to start the pumping. यस सर. Once the pumping is done, monitor the pressure and keep informing me the pressure. Rajesh, what is the status? Any leakages? Okay, now we can give all clear. The leakage has been arrested successfully. The fire has been doused. We can give all clear. All clear. तुम्ही पाहू शकता की साईड काम. Let us invite some of the visitors and the mutual aid members to visit the site and see what is the status. यस सर. लीकेज एक्सपोज हो गया एंड यू सॉ द गेट आया और वो जैसे कि हमने बताया था दिखा वो अपना सिगरेट या बीड़ी पीते पीते उसने वहाँ फेंक दिया था. ये साइट ये है लीकेज की, लेकिन आग वहाँ लगी थी. आग वहाँ इसलिए लगी थी क्योंकि मटेरियल फ्लो होके वहाँ चला गया था और वहाँ किसी का ध्यान नहीं था. यहाँ का कंट्रोल्ड है बट वहाँ पे हमको नहीं मालूम कहाँ तक गया है. सो दैट इज़ बाय आग वहाँ लगी थी जिसको हमने वहाँ पे रिस्ट्रेन किया. फिर यहाँ पे आप देखिए जो पाइपिंग का होल हुआ था, जो ड्रिल किया गया था होल उन्होंने उसके ऊपर प्रॉपर क्लैंप लगा के एट द टाइम बीइंग, बिकॉज दिस इज इमरजेंसी मेजर, वी हैव रिस्ट्रेन द लीक, वी हैव पुट अ क्लैंप ओवर इट. Subsequently, we will come and do proper welding and jointing of it. But as of emergency, now that we have put the clamp, the emergency is abated. Emergency अभी खत्म हो गई है, अब यहाँ से कोई लीकेज नहीं होगा. ये आपको सिर्फ प्रोसेस दिखाने के लिए ये हमने ये पाइपलाइन क्रिएट किया. ओके, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस देन आई कैन आंसर. ओके, यू कैन कम बैक टू द. यहाँ जो भी ड्रिल प्रेजेंट किया गया वो बहुत अच्छे से और वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से किया था. Thank you, sir, for inviting us and making us part of this offsite drill. And a big round of applause, which all you deserve. And I request everyone to give a big round of applause. Sir, I will say, in terms of mock drill, you have set some levels now. प्रथमतः तर मी आपणा सर्वांचं इंदोरी ग्रामस्थांच्या वतीने इथं स्वागत करतो आणि अतिशय सुंदर असा कार्यक्रम आमच्या गावामध्ये तुम्ही घेतला त्याबद्दल मी आपला आभार पण व्यक्त करतो. सभी को ये जो मॉकड्रिल आयोजन किया, HPCL टीम को मैं बधाई देता हूँ कि काफ़ी अच्छे तरीके से इस मॉकड्रिल का आयोजन और जो डिज़ास्टर यहाँ पे उत्पन्न हुआ था उसका मिटिगेशन. तो ये जो आज का जो मॉक ड्रिल था ये बहुत बढ़िया था. मैंने तो और ये सेकेंड मॉक ड्रिल लोकेशन में आ पाया, पर काफ़ी पिछले बार से मॉक ड्रिल से काफ़ी इम्प्रूव है. इसीलिए मैं पूरा टीम को, हम सभी लोग को साधुवाद करते हैं. आप इसी तरह ऐसे काम करते रहे. हर एक काम करने में कुछ ना कुछ जरूर स्कोप ऑफ इम्प्रूव्हमेंट. आज इथे आपण जे HPCLचं जे मॉक ड्रिल केलं, सर्वात सुरुवातीला परमिशनसाठी माझ्याकडे आले होते किंवा कलेक्टर ऑफिसला ज्यावेळेस आले होते मागच्याच हप्त्यामध्ये, म्हणजे खूप कमी कालावधीमध्ये आपण सर्वांनी या सगळ्या डिपार्टमेंटला पत्रव्यवहार करून सगळ्यांचं समन्वय करून म्हणजे गेड़ा सक्षम प्राधिकारी इस पद में 2018 से कार्यरत हूँ. सो आज तक मैंने कभी भी इतना अच्छा परिदृश्य कभी देखा नहीं जो आज मुझे फर्स्ट टाइम इस प्रकार का मौका मिला. सो मंच पे सभी उपस्थित मान्यवर और जिन्होंने प्रात्यक्षिक दिखाया वो हर टीम बहुत अच्छा आपने प्रदर्शन किया, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करती हूँ. The mock drill, the offsite mock, rather to be specific, the offsite mock emergency drill, which was created by and conducted by HPL. It was one outstanding, and the real factor is that the various agencies participate in such kind of offsite emergencies like NDRF, civil administration, police, fire brigade, etc. So
Srimati Harshlatha madam, thank you for taking all your time off, coming all the way from Ratnagiri and wherever you were at today, I do not know, but you have taken your time off, and it was a very pleasant sight to have the competent authority from the pipeline attending this, which does not happen very often. So I really thank you from the bottom of my heart that you were here and visited this. Banote Saab, guidance and prompt action from the district collector office has always enlightened us, and जब भी हमने बानोटी जी से expect किया है, बानोटी जी has stood up to the occasion, and उनके ही सारे जो मेल्स हमने जो कलेक्टर ऑफिस को दिए, उन्होंने मेल्स किए, उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स को कम्युनिकेशन फॉरवर्ड किया, बेसिस विच दिस कोऑर्डिनेशन दैट आपने देखा, all the departments rush to our help is thanks to Mr. Banote's mail which has gone ahead. Thank you for all those wonderful things that you did, Banote ji. Then Justin Joseph ji, amazing, hats off. We had expected you all and your team participation in our meetings, which could not happen because of you being occupied in multiple places. But coming out from this thing and coming on the last moment, and you did a wonderful job, your team. Thanks to you all. I agree that you all were, you added the color to the entire drill, because you created a difference. It could be visible. So I really wish to thank you all from you and your entire team from the bottom of my heart. You did a wonderful job, sir. Thank you very much. So Dr. Varsha Patil, thank you for those wonderful comments. You took your time out, you came all the way, and your inputs are well taken. I hope that in all our subsequent drills you would definitely participate with us, and you'll keep guiding us in the same way. We have a lot of programs that we need to do together with the medical field, and right from creating awareness into the common villages to blood donation camps to a lot of things can be done mutually. So I would expect much more cooperation in the coming days, where the medical team, fraternity, and we together contribute back to the society. So thank you, and we look forward to having a more fruitful interaction with you all, ma'am. Dr. Sharon Sonavane, thank you for those wonderful insights. The same applies to you. We need to do and have more coordination with the medical fraternity, and thank you both for taking your time out from that and witnessing this. Yes, I agree. We will rectify that in future so that it happens in sequence. Point well taken, sir. सरपंच शिंदे साहेब, आपलं मार्गदर्शन राहू द्या, आणि खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं. आपण आलात, हेच महत्त्वाची गोष्ट आहे. आपण आला, आपण बघितलं, आपण विटनेस केलं आम्ही काय करतो, आणि थँक्यू व्हेरी मच फॉर दॅट. आय थँक ईच अँड एव्हरी मेंबर ऑफ माय म्युच्युअल एड, whether it is HPCL Chakan, whether it is USCSPL, whether it is Cadbury's Mondel. I believe without you all coming and giving us your insights, we cannot become better individuals when it comes to giving back to the society. So let's keep up the mutual aid flag high, and so that is what I have to say from my side to each and every of the members. I wish and thank each and every members who have come here, taken their time off in this scorching heat, and stayed with us all the way, guided us. Most of all, I really wish to thank all my team members, whether it was the fire and safety team, maintenance team, RO team, control room, and all the boys who were doing, and the back end guys, the guys who made this beautiful stage, the guys who did the photography, the guys who all were guiding the traffic. I guess it was very well coordinated effort, and I need to thank all my team members for that wonderful, wonderful, wonderful performance. Thank you all. Hats off to you, and a big round of applause to each one of you.